Hello students. So today we will go through our chapter number 3, advanced formatting in with MS Word. So all of you know how to open it. We have to go to start button and then we have to click on Microsoft Word. So this window will appear. So as you know, when we open the MS Word window, so it will appear like this. So it is our sheet which we call as page. So what our first topic is on page formatting. So as you can see here, first we're gonna start with, so I will tell you the tabs. There are different types of tabs, and to do the designing of our page, so you have to go to design tab. So in this, फर्स्ट इज़ अ पेज फॉर्मेटिंग, जिसमें आपको बताया गया कि इट इज़ एन इफेक्टिव डॉक्यूमेंट एज इट अपीयरेंस. उसकी अपीयरेंस चेंज करने के लिए, उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वी हैव टू गो टू द पेज लेआउट टैब टू डू द पेज सेटिंग्स, to make it more attractive and to do the appearance of the all. So these are some designs. If you want to click on any design to go through the पेज की फॉर्मेटिंग करनी है, then you have to go to design tab और वहाँ से आप यहाँ से font settings ले सकते हो, and you can also color the theme of the page according to your choice. So first is applying theme. So applying theme apply करने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप करके रखा है. So in this we will do the page settings. So now we have to go to page layout tab because we have to apply page borders. So students, you can also apply page borders through the home tab also, from where I can show you. You have to just click on home tab. In the paragraph group, here is an option in the under the borders and shadings. Borders option के साथ एक drop down list, you have to click on that, then click on borders and shading. A dialog box will appear. So you have to go to page border because we are doing the page border settings. So you have to click on the tab page border, and then you can apply the box setting. You can also see the preview from right side, and here are the styles you can apply. Color you can choose. Width you can also choose the borders, and if you want to any customize border, you can also apply it on from art option. So when the settings you can available, then you have to just click on OK, and you can also see the whole document भी करना है, you can just click on that. By default ये option पहले ही available होता है. So when you click on OK, you can see you can apply the page border in colorful option also, and you can also customize your page borders. Okay, so this is the working of page borders. So now I will tell you what is page margins. So when you see on the page, the paragraph के side पे left side, right side, top and bottom, you can see some spaces. So these blank spaces between the text and the edge of the pages are known as margins. So इनको हम margins बोलते हैं, जो कि 4 types of margins are available here: top, bottom, left and right. Top and bottom margins को हम बोलते हैं vertical margins, whereas left and right margins are known as horizontal margins. So to do the settings of this, we have to go to page layout tab. Then you can see paragraph group के अंदर एक small arrow दिया होता है which is called as quick launch box. You can click on that. Borders and shadings के अंदर you can see all the options available here. हमने page margin की setting करनी है. So you can also go to the indentation to do the paragraph spacing left or right. These are also available here options, and you can see the preview also, and spacing options आप कर सकते हो अगर आपने paragraph के text के अंदर कोई spacing देनी है तो. Here are the margins available also कि आपने narrow रखना है, moderate रखना है. So whatever you are clicking on the options, you can see all the options available here. आपने landscape में रखना है, आपने portrait में रखना है, it's all about your choice. And these are options: the top, left, bottom and right option.
एंड इफ़ यू वांट टू डू द लैंडस्केप पेज, अगर आपने लैंडस्केप में रखना है मीन्स हॉरिजॉन्टल पेज में करना है, तो यू कैन गो टू द ओरिएंटेशन ऑप्शन इन दी पेज सेटअप. सो दीज आर दी ऑल दी सेटिंग्स रिलेटेड योर पेज. सो हम इसको पेज सेटअप बोलते हैं. पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी. मार्जिन्स आर अवेलेबल देयर, साइज, ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन में वी हैव टू टाइप्स, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप. एंड जो आपने व्यू रखना है, अब ये व्यू हमारा लैंडस्केप व्यू है. सो नाउ व्हाट वी गोना डू इज़, हमने इस पैराग्राफ्स में जो टेक्स्ट लिखा है इसके अंदर मुझे कुछ स्पेसिंग अप्लाई करनी है. सो हाउ कैन वी डू दैट? टू अप्लाई सम स्पेसेस बिटवीन दैट, first you have to select those text, and then in paragraph group you can see a quick launch box. So you have to click on that. कहाँ से स्पेसिंग कर जाने, आपने आपने स्पेसिंग सेटिंग्स पे जाना है. एंड यू कैन, इफ़ यू वांट टू बिफोर एंड आफ्टर, अगर टेक्स्ट के पहले आपने स्पेसिंग चाहिए देन बिफोर, अगर नीचे बाद में स्पेसिंग चाहिए देन आफ्टर. एंड यू कैन सी द प्रीव्यू आल्सो showing there. After do the setting, you just have to click on that OK option. एज यू कैन सी हेयर, मैंने बिफोर की ऑप्शन रखी थी बिकॉज वी आई वॉन्ट द टेक्स्ट बिफोर द स्पेसिंग. मुझे स्पेसिंग जो है टेक्स्ट के पहले चाहिए थी, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ के बाद वाला जो पैराग्राफ है उसके बीच में मुझे स्पेसिंग चाहिए थी. सो आई जस्ट क्लिक ऑन दैट बिफोर ऑप्शन. एंड यू कैन सी इन पैराग्राफ ग्रुप आल्सो यू कैन डू द स्पेसिंग फ्रॉम दिस साइड आल्सो. अगर आपने लेफ्ट साइड से राइट साइड से अपने मार्जिन की स्पेसिंग करनी है, यू कैन डू दिस फ्रॉम हेयर एज वेल. So now I want to tell you what is alignments. As you already know, alignments are four types of alignments: left, right, center and justify. So alignments क्या करता है? How to set the left and right edges of your paragraph and align your page. So as you can see in paragraph group in home tab only, so there are four types of alignments. So when you click on justify, you can see both sides of the paragraph will be equal. If you want to click on left side, then it will be in left. And I have clicked on this just center button, center alignment. So you can see only paragraph जो है center में आ गया, but this is not aligned on both the sides. Equal नहीं हुआ है paragraph on both the sides. अगर both the sides में आपने paragraph equal करना है text को, you just click on justify alignment. As there are four types of alignments: left, right, justify and center. And one more thing, if you want to do your paragraph in columns में करने हैं, 2 parts में करने हैं, 3 parts में करने हैं, so you just have to click on this columns option that is available in your page setup group in home tab, in page layout tab only. If you want to divide your paragraph in 2 columns or 3 columns, you have to click on the columns option in page setup group. So students, our next topic is on format painter. Format painter क्या होता है? When you want to copy your formatting of a piece of some text or image to another selected text. So this is option available in home tab only. So मतलब इसका मतलब ये होता है when you apply multiple formatting styles to a single piece of text. If you want to repeat the same formatting at multiple places, ठीक है, so we can use this format painter tool. So students, I think it is useful to you, so go through it thoroughly.